So this is about your question that who decides and how does a transaction gets into a block in the blockchain. And so this is what the person who is the miner, this is what the miner is doing, that he collects the two transactions. And so this is, sorry, here. So he collects the two transaction and the hashes and just makes this tree of hash and calculate this. This is the Merkle root, and then takes it and then combines it with rest of the information, and then doing the proof of work. So we know about the binary trees, we know about how the hashes are computed, and we understand now what Merkle tree is and who is this Mr. Merkle. And that also gives us a way for checking, anybody who wants to check that if anybody has gone down and changed a transaction, it's again very easy. Those who are verifying blocks, then you can just verify all the blocks in the blockchain by looking at every transaction, computing the hashes, then collecting this, and recalculating the Merkle root. If these two are correct, then you are fine. You know that nobody has changed any transaction even in the history for every block. So for any block, you can always check and verify whether it's a valid block and nobody has made any changes in the transaction. May it be a transaction that deals with money, or may it be a transaction that deals with your house and that deals with any other thing. So if there's a transaction in a block, that's why it is called immutable, that nobody can go back and change, because then everything will change. Once the Merkle root will change, then the block hash will also change. So successively, any change made in the transaction will reflect in changing in the Merkle tree, Merkle root, and also in the hash of the block. Okay, so this is called the Merkle root or the root hash, and which is a very important hash. सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, ये जितने हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन होंगी उतने ही टोटल हैशेस कैलकुलेट करके और मर्कल ट्री उनका बनेगा. अगर 2000 ट्रांजैक्शन है तो बेस उन्हीं से मर्कल ट्री बनेगा. प्रिसाइसली. जैसे हम 2000 है ना, तो एज नाउ यू ऑलरेडी सेट कि अब ये 2000 ट्रांजैक्शन है ऐसे करके. ठीक है, लेट्स से ये 1, ये 2, ये 3, ये 2000. ओके, 4, 5, 6. So पहले इसका हैश, इसका हैश, इसका हैश, इसका every hashes of every, and then you combine, create a hash, and then you again create a hash. So इस तरह होते होते आखिर में you will have only one hash. तो सारी ट्रांजैक्शन का हैश निकलेगा. ओके, अच्छा सर, एक थोड़ा सा प्रीवियस से भी थोड़ा एक कॉन्सेप्ट था. अब ये हर माइनर ब्लॉक बना रहा होगा तो किसका ब्लॉक ऐड होगा और किसका ब्लॉक ऐड नहीं होगा हमारे को? जो सबसे पहले बना लेगा उसका ऐड होगा. ठीक है, इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम. सो एनीबडी हु सेज यस आई हैव माइंड अ ब्लॉक, सारे जो दूसरे माइनर्स हैं, दे स्टॉप, दे चेक दे विल वेरीफाई कि ये सही ब्लॉक बना कि नहीं बना. Okay, checking would not take any time, because checking is only, we know how fast you can compute the hash with the nuance. तो वो सारे चेक करेंगे, वो कहेंगे हाँ, तो वेरिफिकेशन आना चाहिए होगी, वेरीफाई. So everybody would say yes, this block is correctly mined. So people will start now minting the new block instead of minting the old block. तो इस तरह से होगा ये. ठीक है ना? Sir, normally the miners, they employ all their processing power making one block, और या वो पैरेलल भी कर सकते हैं कि एक कुछ रिसोर्सेज कमिट कर दिए और बाकी जो हैं वो पिछले आने वाले ट्रांजैक्शंस पे कमिट. वो थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या होता ये है कि जो आपको गेन मिलता है ना, लेट्स से इफ यू हैव 100 कंप्यूटर और 200 कंप्यूटर, द गेन इज नॉट लीनियर, द गेन इज अ लिटिल बिट एक्सपोनेंशियल. ओके, so this is 100,
ये इसी तरह से मसलन अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हो, आपने फेंकी है डाइस, तो उसमें हिटिंग अ 6, and then if you have two dices and you roll them together, you get better chances of hitting a 6, ठीक है ना? so उससे ये होता है कि आपके थोड़े से chances जो हैं वो थोड़े से a little bit more, so instead of splitting their resources, वो कर सकते हैं, वो कर सकता है कि अच्छा मैंने तो ये हैश शुरू कर दिया ना बनाना, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आ रही है ना वो इकट्ठी करे एंड स्टार्ट मिंटिंग। लेकिन अच्छा अब अगर यानी कि थोड़ा सा सक्सेसफुल इस तरह से हो सकता है, अब इसने ये ब्लॉक बना लिया, ठीक है, लेट्स से इस बंदे ने कहा कि मैं ना आधे कंप्यूटर लगा देता हूँ जो करंट है और आधे कंप्यूटर लगा देता हूँ जो नेक्स्ट है। सो ही इज सेइंग ओके लेट मी वेट एंड आई विल पुट हाफ ऑफ माय कंप्यूटर्स टू मिंट द नेक्स्ट ब्लॉक। अब जो इस वक्त की ट्रांजैक्शन है वो तो सारी इसमें आ गई, ओके, ऑल द ट्रांजैक्शन, and he has rest of the transaction coming, so he waits for let's say 5 6 7 minutes, ज़ाहिर है नई ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करनी है। So this guy, these computers are still computing, okay, he decides that he will wait and start minting. So this is the benefit he is getting starting in parallel, otherwise तो कोई benefit नहीं है, he's because he has to collect the new transactions जो कि are happening after this block he has started minting. But also remember कि ये जो block है जब ये बनेगा तो it is pointing to the previous block, so ये वाला has to point to this block, right? जब तक ये नहीं बनेगा ये शुरू ही नहीं कर सकता, so the gain is very little unless he has minted this. अच्छा अब एक ट्रिक को ये कर सकता है, अच्छा मैंने बना लिया, मैं भी बताता नहीं हूँ ठीक है, कहता मैं नहीं, I will not tell anybody I have minted this block, I'll keep it to myself because I am the only one who knows the address of this block, so I can use the address here, लेकिन ये ना इतनी देर में कोई और बना के कहे block has been minted, so he is taking a risk, ठीक है। so अब उसके ऊपर है कि whether he should take this risk or not, but he is gaining definitely, so वो रिस्क ले रहा है कि मैंने अगर जल्दी मिंट कर लिया, फॉर एग्जांपल ही मे बी लकी, तो ही सेज के इंस्टेड कि मैं इसको अभी से बता दूं, let me wait, collect more transactions, use this address because this address is to be part of the hash this, and but then हो सकता है कोई और कह ले जी ये आ गया नया ब्लॉक, so then he lose this block definitely, सही है ना? और फिर जो उसने ट्रांजैक्शन डाली होंगी there may be transactions which are not part of those and he may want to consider, may not want to consider, it's up to him, लेकिन अब इसको एड्रेस डालना पड़ेगा वो जिस दूसरे ने बना लिया, so he has to put that address in his block to mine, so he has to mine it again, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ because as you know even if you change a dot the hash will change, so then he has to start from 0 because उसने जो गेन किया होगा वो खत्म हो गया gain for him, as now it is no more the address of this block but the address of the block which has been minted by somebody else. So trick here है, people must be playing these tricks or may not be playing these tricks, ठीक है, because they may be taking risk and so अच्छा अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई आपने you want to compute the hash and why not to put all the transaction in and compute a hash, why to make it into a tree, and what do you get by making it into a tree? Just put all the transactions and just compute one hash. Definitely you can do this, okay, but it will be very difficult for a person to find out whether his transaction is in the block or not. If he does not have a copy of all the transaction, all the blocks, so that is why Merkle tree is because you can do सर इसमें एक और क्वेश्चन है, if you can answer me please. Sir, इसमें can we use this Merkle tree for the authentication purpose? Like IoTs are very much common these days and getting like very important. And can we use them for the purpose of authenticating any IoT in the network? Yeah, this is just a random question, but actually what happens, like you have to make the leaves, right? And for the leaves you have to make the either a hashes of them or just to encrypt them by using a public key. So
So actually, can we use this Merkle tree specifically for the authentication by not using any other public key technique? नहीं 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 देखो वो ना IoT is a physical device ठीक है Sir, so it is a physical device is usually the data not it is for the verification of the data let me give you an example ठीक है for example you have a big database ठीक है so you divide it into chunks predefined chunks ठीक है 1K के chunks बना लें so these are the chunks and so you compute hashes of each chunk right so all the data here you compute its hash all the data here you compute its hash its hash its hash now you make a Merkle tree h12 h23 h1234 and similarly end of the day you get a root hash see the guy who invented this specifically did this for this particular reason now people don't have to keep let's say if I may have my data in this transaction and so it's a humongous amount of data and you only want to check validity of this data whether this piece of data is there in this big database or not whereas you have only this ठीक है आमतौर पर distributed databases you have only this amount of data let's say this is your transaction and you want to validate whether your transaction has been part of the blockchain but you don't have all this data see ये data नहीं है आपके पास because you don't want to keep all the transactions and the previous block and this block and that block you say I don't want to keep that I have my own personal transaction but then there are people who have all these transactions and you say well I want to check I want to verify whether my transaction is included in the block or not so the person who has all these transactions would send you a set of hashes and you will see that how it happens and you yourself will able to verify whether your transaction is part of the block or not and that is the beauty जो Satoshi Nakamoto ने किया था ना just an amazing guy he primarily put this that this is how he wants to have a clients which he understood that it will basically scale it'll go to gigabytes of data it'll just keep growing because it's just creating new and new blocks and the data will keep growing not every node will able to keep the entire blockchain so there will be lighter clients as well they will be more concerned about their own transactions whether that this transaction is part of the blockchain but then there will be nodes okay the peers who will be basically checking and validating a block being mined by a miner okay because they will verify so they'll verify and then only they put it part of the ledger where the blocks are being placed so इसमें हम देखते हैं कि how it is used ठीक है why what is the benefit of using Merkle tree और जो आपका क्वेश्चन था कि IoTs में I don't really see any way of authenticating that because there are other ways every IoT device if it is on a network has an IP address so there are like simple protocols routing protocols which would authenticate whether a device is in the network or not because it has an address so if it has an address all you have to do is use TCP IP protocol and just send a request and if you get an acknowledgement it will tell you yes this device is there and is part of the network if you don't get an acknowledgement you know either its battery is off or for some reason it is no more part of the network so usually these makes an ad hoc network and a routing protocol would actually can easily tell whether a device is in the net anybody who wants to check it is very simple for him to check because of the IP protocol ठीक है but this is but sir people are actually using this like मेरा question इसलिए इसमें था थोड़ा सा कि because quantum computing is right now a real threat to this Bitcoin and everything because of the public cryptography so all these and everything they are available right now because they are based on
like anywhere world, every cryptography is based on the key. So that's why my question is that can we do something like uh, an organization who wants to like authenticate, build a pool of these devices, build a permission blockchain or something like. डेफिनेटली देखो जो पब्लिक ब्लॉकचेन है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज IoTs to build a public blockchain, it's so you will build a public blockchain of IoTs from the data the IoTs are collecting from the sensors. ठीक है, so let's say this is a sensor which is collecting temperatures in an industrial setting, and the temperature is normal. So basically this is an edge device which every 10 minutes tells that temperature is normal, temperature is normal, temperature is normal. So every device is saying temperature is normal. So every 10 minutes amount of data. So you have like all these IoTs placed measuring the environment. Okay. And either you may want them to actually send the temperature value, but perhaps that is not required because it's a humongous amount of data. You don't want to put it in the blockchain. But you want to put it in the blockchain, you say there is a range of temperature. This is high, this is low. As long as it remains inside this, you are okay. So you say you will create a new block every, let's say 30 minutes. Okay? Every 30 minutes, you will create a new block. Let's say this particular IoT goes out 5 times high, 2 times low, and you can put a timestamp as well. Okay. So now what you do is that you say, okay, I want these values to be part of the blockchain because I want these to be immutable. I don't want anybody to come and change it. And because these are important measurements which are affecting the product and the regulator needs to know it, or anybody who is concerned needs to know it, and you want to create a blockchain. There is a smart contract which is running and which checks, oh, if this is going high, this is low, you have to shut down this plant or this plant, right? Automatically you say shut down these plants because let's say you are making medicines and the temperatures are going up and down, and you know that these have consequences on the quality of medicine you're producing from that particular plant, so you got to shut down the plants. Or you need to generate alerts, warning alarms, or there may be another. So you see now every 30 minutes you have a block which just logs that 0 occurrence, 7 occurrences, 0 occurrence, 2 occurrences, 0 occurrence, 0 occurrence, 0 occurrence, right? So these are the transactions from every IoT. So IoT is sending this transaction, this transaction, this transaction, and there may be other information as well. So now you need to make a Merkle tree of all these so that you make it immutable, so nobody should go back and change it. So anybody who is mining need to make it a Merkle tree and make a Merkle root, put a minus, do some proof of work, and say, okay, this is a block in the blockchain, and generate an alert and alarm as well if there is any part of concern, and that goes to the client application. So here it makes sense that क्या आप कर सकते हैं. Answering your second question about the quantum computing, अच्छा, please remember that in a blockchain you are not encrypting any data. ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी चीज एक्सपोज है, कौन सी एक्सपोज नहीं है. अच्छा, you are not primarily encrypting any data. Data is in clear. It's basically सारा plain text है. The hash 256, there is no magic in hash 256 because anybody can take that data and compute the hash. Okay, so you're not hiding that this data will generate this hash. Anybody can create, because anybody who wants to validate whether he's using quantum computing and he's not using quantum computing can generate the hash. Right? Now comes the if let's say okay, you want this to be signed by its private. You may not want because it's just your permission blockchain. You have installed this device, so you are not really concerned for this data to be signed, digitally signed by an IoT device. If you want, you can get it signed. If you don't want, you cannot get it signed. This is where the vulnerability is. Vulnerability is that can somebody, I have signed it with my private key, and can somebody decrypt it without
So anybody, so you have public key everywhere, so anybody can actually, so you are not even worried about that, because आपने कहा public key, everybody has a public key, whether quantum computing or not quantum computing, so anybody can. The real question is, can somebody from my public key find out my private key? Okay, so means from this encrypted data can figure out that which key is used to encrypt this. Okay, and if he can find out my private key, so this is where the vulnerability is. Agar using quantum computing, somebody can figure out my private key, so all digital wallets are exposed. Okay, if a private key is known, ठीक है, मैंने कोई transaction की, उसने उसी वक्त मेरी private key पकड़ ली. If I'm not doing transaction, obviously nobody can actually get my private key. So if you have supposedly you infinite computing power at your disposal, knowing the which type of encryption algorithm somebody is using, you try to figure out the key, a private key, and you have the private key. Now, the many things which you can do if you have a private key. Number one, you can create a transaction primarily yourself, and can make it part of the blockchain. But in a permission blockchain, again, it becomes difficult. In a permissionless blockchain, yes, you can. But in a permission blockchain, there is an IP address as well. There's a digital certificate as well. So there are many other measures which you are taking to ensure that the information coming from a node is actually coming from that node. Somebody has to intrude in as a node only to be just part of the network. तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली इन जो permissionless या public blockchains, they are more because anybody knowing your private key, then you are dead, because now this guy can make a transaction and takes all your money out. But then remember, everything in a blockchain remains in the system. So if somebody is doing this, and you can always report this to this forums, let's say Ethereum has this foundation, and you can report this, that here is this guy who primarily is taking away all my money. So you can create a new wallet, register this complaint that this is what has happened, and if they want, they can return you your money if they want. If they figure out that, and they have to then figure out some other encryption algorithm which even quantum computing cannot break. Okay, or using a quantum computing, they have to come up with some algorithms. So this is again coming back. So Merkle tree, we understand. Thank you, sir. The Merkle tree is from hashes. Again, you got a hash. Again, you got a hash, and finally you get a hash. So in this case, it is a 16-bit hash, but for us it is 256. Hash could be 16-bit as well, but it is 256 to make sure that it is unique, because 16 may not remain unique. There are 2 raised to the power 16 possibilities, but once you have 256, you have 2 raised to the power 256 possibilities of generating a unique number, which is a big number. So larger the number of bits, better it is. So now comes the verification part. So let's now, as I mentioned earlier, you have these hashes, and you are, let's say, number 7. You are number 7. Okay, and you want to check whether your transaction is in the block or not. Okay, so there is this guy, and there are many of these nodes in the network which has all this information, but you don't. So now you have to send a query, send a request that I'm number 7, and I want to myself verify whether my transaction is in the blockchain, in the newly minted block or not. So what people would send you is hash of 8, because you yourself can compute hash of 7. Okay, they send you this, and they send you this, and they send you this, and you already have this. So this is the information you have, because every block has the
Merkle root in it. So this is the only information you have in the block. Okay, but you have all the transaction also in the block, which the lighter node, which does not want to keep all the data, they don't. But then there are nodes in the network which they have all the transactions, all the information, and you are worried and you want to check. So you send a query to a node which is connected to you, and you say, send me the information. I want to check whether myself, I want to verify whether I'm part of the block or not. So once you get this, you do hash of this with yourself, and you get this. And somebody has sent you this as well, because somebody knows that this is where you are in this Merkle tree. So you send you hash. So you take this hash, compute this. So this hash is sent to you, and this hash is sent to you, and this hash is sent to you. So only 1, 2, 3. So somebody would only send you these 3 hashes for you to know, yes, I am part of the new transaction. G. Sir, as you said, like number 7 wants a verification for himself. So everybody connected to him somehow will send him his hash. Otherwise, it's not possible to, verify. Not everybody. Like a node which has a complete copy of the blockchain. Okay? Remember, a complete copy of the blockchain, he requests, because every node has a type. So a node which has a complete copy of the blockchain, he requests that to send him, he wants to verify whether this particular transaction is part of the block or not. Okay. So because it's a distributed network, not everybody is going to send him this. He requests only one computer and they will send. Okay, that computer would send him this hash, this hash, this hash. So once he has this hash, he can compute this hash, and he compute this particular hash. With this hash and this hash, it computes this hash, and for this hash and this hash, compute this hash. Right? So this is जी सर इस नोड को कैसे पता होगा कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में किसके पास कंप्लीट ये सारा एड्रेस पड़ा हुआ है? जी मैंने आपको बताया कि नोड्स का ना टाइप्स हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क में. एवरी नोड हैज अ टाइप. देयर आर सम नोड्स व्हिच आर माइनर नोड. दे माइन. दे मे नॉट हैव कॉपीज ऑफ ऑल द ब्लॉक्स. ठीक है, उनको सिर्फ करंट ब्लॉक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके पास, और दे माइन. Then there are full nodes. Full nodes are the nodes which have copy of everything, and they are not mining node. A mining node may also be a full node. Okay, a full node has a copy of all the blocks and all the transaction and everything. And then there are lighter nodes. Okay, they are not concerned. They don't do the verification. They are just there. They're part of the blockchain network, and they are more concerned about themselves. कि जी मेरी transaction है कि नहीं है इसके अंदर ना. ठीक है. So you know that the network knows, because it's a peer-to-peer network. You know that how many nodes that you are connected to are the full nodes, and you request a full node that send me this information. Right? So they send you the information because you already know this, so they cannot play with it. ठीक है, उन्हें कोई इतना वो भी नहीं है ना interest. So we don't think that they would not maliciously. Then you can request maybe some other node if you don't find yourself in here, or you know that you are not here. So अब देखिए आपको ये एक और example है. Let's do this example. Okay, let's say you are this node. Yeah, you are this node. Okay, you are this node. And you want to check whether, and you only know this. Here, this is the root. This is the Merkle root. And you want to validate. And so you ask that, okay, this is who I am, and I want to validate myself, whether I am, part of this or not. So a node would send you this hash, and this hash. That's it. Okay. So after receiving this hash, you compute this hash, and combine these two, you compute this hash, combine these two, and you check whether you get C0A or not.
You get this? You are happy that yes. अच्छा अब आप देखिए कि this is not only for Bitcoin, but this is true for any kind of a distributed database which is spread over places, and you want to check whether this piece of information is part of the database or not. So that's why it is used, that all you have to do is just ask people to send you hashes, and using the hashes, and everybody knows the root hash, you can validate that whether you are part of this. So this is why this is called Merkle proof. Merkle proof consists of a chunk, the root hash of the tree, and the branch consisting of all the hashes going up along the path from the chunk to the root. Someone reading the proof can verify that the hashing, at least for that branch, is consistently going all the way up to the tree, and therefore that gives chunk actually is at the position in the tree. So do the verification कि आपको सिर्फ Merkle proofing ये कहती है कि if you are a chunk of data and you want to know where you are placed in that tree, so for getting some information, you can basically find your place and know that yes, I am part of the tree. अब ये एक और एग्जांपल है सर। ठीक है जी जी बताइए सर ये तो ओवरहेड नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी ट्रांजैक्शन पास होगी और मुझे कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि आप इस ट्रांजैक्शन के अंदर हैं, वो बेहतर है या ये हम प्रूफिंग करते रहे? ये तो ओवरहेड हो जाएगा पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर। अब हर कोई बार बार पूछता रहेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ इसका पार्ट। देखिए ये ओवरहेड इसलिए नहीं है कि देखिए कोई भी आपको ना, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, रिमेंबर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं. नोबडी इज कीन and nobody knows whether you are a full node or you are a lighter node, ठीक है ना. If you are a full node, you already know yes you are part of the transaction, part of the new block, because you are a full node, आपके पास सारी चीजें. If you are not a full node, ठीक है, only then you need to know that whether where I'm placed and where, or it's a very little information. ये बहुत ज़्यादा information नहीं है, ठीक है. It's very little information, so only like few of the nodes which are just part. अभी तो ऐसे हो गया ना कि like you are connected to an exchange, and exchange is actually doing all of this, so exchange would give you a notification, rather वो तो उसी वक्त आपकी transaction कर देते हैं ना. So it is a classical distributed computing problem, सही है, जहाँ पे there is no central authority, आपका distributed network है, आप उसमें data is usually also data may be spread all over the places. क्वेश्चन था सर, ये जो अब नोड्स हैं सर, जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं पूल्स में, तो फिर वो पूल एक नोड होता है हमारे बिहाफ पे? जी वो पूल हमारी तरफ से, वो पूल एक नोड होता है जो कि इसको माइन कर रहे होते हैं मिलके ना, वो इट्स अ लॉजिकल एंड इट्स अ लॉजिकल यूनिटी फॉर अस. There may be like thousands and thousands of computers, but for us it is just one node which is doing the mining. ठीक है. अच्छा आप देखें, for example you are TD, and how do you check whether TD is, so you only know this, and your query should be send me to verify that yes I am part of the Merkle tree. So somebody sends you this and this. It's obviously it's very little information, and then you compute your hash, compute this hash, compute this hash, and compute this hash. You say yes I am part of the Merkle tree. So this we have already seen that Merkle proofs in Bitcoin is this is your hashing, and this is your Merkle root. You have what else is there in a block? Nuance है, your previous hash है, or the timestamp है. So these are, and then it has to be linked with the previous block, and then so any block in between would have number of these transactions, but a block has all this information, and then you just keep creating another Merkle root, and that's how they are knit together to make into a blockchain. So ये information again, Merkle root is important, nuance is important, previous hash is important, timestamp is important, and that goes in a blockchain. So Merkle trees are important, and again showing you this is the Merkle root.
Maybe next time I'll show you all the transactions as well, so that you know how this whole thing happens. So this is the Merkle. The Merkle root is very key to this, and it has, you know, all the transaction as well. ये ना, this is coming from Satoshi paper, that the benefit that this provides is the concept that Satoshi described as simplified payment verification. So in his paper he called it simplified payment verification, whether a transaction has happened or not. So it says instead of downloading every transaction and every block, a light client, so this is important, a light client can only download the chain of the block headers, 80 byte chunks of data for each block that contains only 5 things. उसके पास है hash of the previous block, timestamp, mining difficulty, proof of work, noise, a root hash of the Merkle tree. So this is what a light node would have. If the light client wants to determine the status of a transaction, it can simply ask for a Merkle proof showing that a particular transaction is one of the Merkle trees whose root is in the block header for that main chain. So if he wants to verify, it is again in the Satoshi Nakamoto paper. He called is if there is a light client which has only these pieces of information, he can, if he wants to validate, he can simply ask for a Merkle proof. A Merkle proof would show that yes, the transactions are part of whether the transactions that transaction is part of the network or not. अच्छा, ये और intricate है in Ethereum because there's a smart contract and it is not only the ethers, then there may be other type of transactions and then there may be crowdfunding, and so an Ethereum network takes into account not only transactions which is transferring ethers but a lot more. So I'll not cover this, but it has not one but 3 Merkle roots. So it has a state root, a transaction root, a recept root. So it has 3 roots, and 3 roots are meant to do different things. I'll see that if we need to go down and find out these. Okay, so transactions का root है, then recepts का root है, and then the state का root है Ethereum network के अंदर. So if need be, we may go back and do this, or for these are the different reasons कि क्यों उसने 3 roots रखे हुए हैं Ethereum में, but Merkle tree is there, but expanded. So so the Merkle trees are in Bitcoin, Merkle trees are in Ethereum, and another important thing where the Merkle trees are the IPFS. ठीक है? So सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, जिसकी ट्रांजैक्शन 6 महीने के लिए किसी ने उसको माइन ही नहीं किया, तो 6 महीने तक मार्केट रूट ही चेक करता रहेगा कि मेरी ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं. यस, ये चेक करता रहेगा मेरी ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं. ठीक है ना, उसकी ट्रांजैक्शन, और उसको वैसे ही पता लग जाना चाहिए कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पुटिंग हिज ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉक. तो सर फिर वो नई ट्रांजैक्शन बना लेगा. Yeah, he can have he can make a new transaction. I don't know timeout क्या है. There must be a timeout if a transaction is just lying there. They should throw it out. I don't know about that, but I'm sure कि कोई उन्होंने timeout रखा हुआ होगा. ठीक है ना, कि कितने अरसे के बाद वो transaction को वहाँ से निकाल देंगे, and then he should make a new transaction of course and put some money for the transaction. अच्छा, अभी मैं एक और चीज करना चाह रहा हूँ. Somebody asked a question as well. Usually people are confused. Number one, don't try to apply blockchain on everything. ठीक है, हर चीज पे नहीं blockchain लगानी. So once you see an application, you need to ask a number of questions to yourself, that should I make a blockchain to implement this system, or blockchain does not make sense here. So just forcing blockchain on every problem we have is also not right. Okay, so let's see. So today we will do a complete
use case, then I'll give you also an assignment where you will be creating, not using any software, but the tools that we have learned, blocks in a blockchain. And then the next thing is like the TAs are preparing maybe a demo or a workshop or for you to see how the Hyperledger fabric works, and then seeing this in Hyperledger fabric. And I also can spend some time in showing you that how this thing happens in Ethereum. Ethereum is simple because there every node is a public blockchain, just executing a smart contract. But once you make your network a permission network, then you have to create so many roles, okay? Because you don't want this person to know this information, but you want this person to know this information. So once you need to give permissions to people, then you need to have a setup, whether who is going to give permission. Okay, there has to be somebody, an important, who is going to give permissions to people that who can access your ledger, the shared ledger, and who can run the smart contract. Then you have to decide that these people can only see this part of information, these people should see only this part of information, and then there are people who see all the information. So again, it's a design problem. And in a public blockchain, everybody can see everything, so you don't need to worry about the complexities of hiding information from some and giving information to others. So that thing makes it a more complex framework to design and handle. But as a designer, you need not to worry about this. As a designer, you only need to know that question number one, should I use blockchain or not, right? So if you are convinced, yes, blockchain is good for this particular application, you say, yes, take blockchain. Yes, I am going to use blockchain. Question number two, should you use a public blockchain or a private blockchain? And there, again, a very simple question to answer, whether it is dealing with public and you don't care whether public can see all the transactions or not. Like NFTs, you don't care who owns it, because that is the whole reason everybody should know that who owns the NFT. Bitcoins, yes, because it hides your identity, because you have just a public address, it is not with your name, so you don't care. You say it's an address, nobody knows that who actually I am. So address having some Bitcoin, so I don't mind. So the second big question you answer is perhaps it should not be on a public blockchain, because then every node has to execute maybe something which is a very stupid transaction for others, because they are not concerned, but it got to be executed, and then it is placed in a public ledger. And you say, but then there may be some application where you say got to be on a public ledger. Okay? Then you say, oh, I think this should be on a private public blockchain because of the reasons that not everybody is concerned. And so you say, okay, private blockchain. But then you say it is private, but everybody in that network needs to know that. So what you can do is you can just copy a public blockchain software, right? It's a Ganache hai. So you have this Ethereum network, but you install it locally and just use, but those who are part of that network would able to just access the ledger and the smart contract. But everybody, you see, everybody just has to have a visibility into that in my network. So any node, so it becomes public, but to a group of people who are part of the network. And then is just where the privacy is the big issue. So we need to understand, got to have a checklist. You say tick, 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 tick. Yes, blockchain. Public, private. Yes, public or private. So why use a blockchain? That whenever you want to have a record, that should not be altered. Nobody should go back and change it. Okay, because you worry about that anybody can come and change it. So blockchain is a good candidate for that record where you are concerned that somebody can change it. Yeah, like ownership of a car, it gets accidented.
or mileage. People can just change the mileage, or so supply chain management, especially for food items, and you need to know when it was actually taken out from the trees or the farms and then put it into boxes, and whether the environment you got to monitor, whether the temperature and humidity was controlled or not, especially the medicines, and you again want to know. And so there may be many applications where you are concerned about people because it is changing hands, and you want to make sure, like elections is another example. We always keep fighting ke धांधली हो गई है, इसने change कर दिया उसने, because it is changing hands. It is from a person who is voting to a polling station to, you know, some people just collecting the votes and going to the places, and ultimately to the election commissioner of Pakistan who is announcing. So it's a transaction which is changing hands, and people are concerned about the fraud. So there you know that blockchain can play its card. Then is the privacy issue, whether anonymization is required. You don't want who you are actually, like in votes, though you want to know that yes, your vote is there. So like the Merkle tree, you want to know whether my vote is part of the Merkle tree or not. But it is not with your name, but it is with your address, which is your public key. So you got to have a digital ID. You have a private key and a public key. You sign your vote with your private key, okay, and send it, and they open it with your public key, okay, and then they count, and they also put it in a ledger as a valid transaction, that this transaction is from this public key, and so and then just a number, and that is what is there, and then just they keep accumulating and saying that this is the result of voting. Information is stored across a network of computers rather than a single server. So another thing, whether you say uh, uh, because in this life cycle this information is going from so many computers, okay, so I would rather have a copy of this in every computer, because I'm happy if it has multiple copies, because then you're not worried about a hacker coming and hacking your computer. You say, I don't care, because like there are 30 more places where the same data is recorded. So you also get it cyber secure for somehow, that because of all the hashing and public private keys, and it is being copied at so many places. So cyber security is less of a concern. You're more worried about hackers if all your information, let's say Nadra, everything is placed at a data center at a central location, and hacker only has to come and just take it or delete it, and they may have you know, this disaster recoveries and where sites, and but what if it knows, and it also basically that is also compromised. So third thing is you want the information spread out, copied everywhere, so it really becomes difficult for the hacker to hack that. Okay? Then if you say, okay, a distributed ledger, and which is the transactions and data are recorded, the same data is recorded in every ledger. So it is not like if there is an application where you say same. G. पढ़ लेंगे है नहीं कर नहीं रहा मतलब कि यही चीजें मैंने लिखी हैं, दैट्स इट, ढूंढ लूंगा. So you use a blockchain. So you create a blockchain, and you so need to decide. So here this is where you need to decide that when to use a blockchain. So you need a shared common database. Okay, you have multiple parties are involved, and then parties involved have conflicting incentives. So somebody may want to change it, and rules governing participants are uniform. Need for an objective immutable log. Rules of transactions do not change, and so there is a policy that's how the transaction is made. So
if all these are yes, then you use a blockchain. Okay, so and then you need to decide whether it has to be a public or a permission blockchain. So once you have this, so now let's take an example. So based on this, so this is very important कि जब आपको ये पता लग गया कि yes, a blockchain आपने बनानी है, so then you say okay, let's make a blockchain. So here is an example which I created for you to understand it completely. Let's say कि we design a blockchain based solution for a universities with the following feature. अब देखें यहाँ पे तकरीबन सारे टिक होते हैं. अब ये है कि and we will take this example to the end कि each teacher shall submit his results. अब एक टीचर है, उसके पास अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन है, वो क्विजेस ले रहा है, असाइनमेंट्स ले रहा है, सेशनल ले रहा है, एग्जाम्स ले रहा है, एंड अल्टीमेटली ही compile and at the end of the semester he has a result. ठीक है, so वो जो टीचर है वो he is not part of the blockchain and this is important. ठीक है, the design में उसने कहा चाहिए he is not part of the blockchain, and what he does is that once end of the semester he consults with head of the department and says कि जी ये मेरा result बना है, and then he may also need to present it to the department board of studies, usually होता है मीटिंग में, and then once everybody is happy, so he sign with his digital signature the result and submit it to maybe an undergraduate program coordinator or an HOD, maybe undergraduate coordinator, and he checks and he says yes, and then it goes to the head of the department, and head of the department again checks and he says yes, it is a valid transaction, results को उसने उसको देख लिया. अच्छा, अब if you want to make it part of the Hyperledger fabric, then you need to decide many of these roles, that who is going to be the admin, who is need to be a peer, client, orderer, and just a member, or where you have to do an MSP, and this is the membership services, that who should all be allowed and what type of access should each of these people have. अच्छा, अब हम ना इसके ऊपर एक ब्लॉकचेन का एक सोल्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं, सही है, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विच चेक्स के हाँ रिजल्ट सही से बने हैं, और किस तरह से अब इन्होंने कंपाइल होना है. ब्लॉक जो है, ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन क्या होगा. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आफ्टर हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक. ओके, उस ब्लॉक के अंदर व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन and how many transactions are going to be in a block, and how are you going to create a Merkle tree of hashes by successfully hashing, वो किस तरह से होंगी. So all these questions will be answered in this particular example. तो ये हमने, और फिर किस तरह से वो डीन के पास जाएगा, किस तरह से CGPA कैलकुलेट होंगे, जो वर्ल्ड स्टेट होगी which is the CGPA of the students, that will change. So student is concerned कि जी उसका CGPA क्या हो गया, so that will be the world state, और इसके अंदर डीन, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, they all will be peers in this network who need to know what is happening at the university level. ये यूनिवर्सिटी लेवल पे होंगे, डिपार्टमेंट लेवल पे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, और एक इस तरह से चैनल्स बनेंगे और सक्सेसिवली एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क बनेगा. ओके, सो टुडे वी डू some of these, and मसलन सबसे पहले तो obviously टीचर है, वो क्या करेगा, he will have a digital wallet, and digital wallet is nothing but a public private key pair. से ये हमने बहुत दफ़ा देख लिया कि he will go and generate. अभी देखें, whether you are doing it from a program or just doing it using tools, it is fine. आप blockchain इसका बना सकते हैं, ठीक है. So this what our intention is to actually make it into a blockchain, और ये अपनी यूनिवर्सिटियों में आप implement कर सकते हैं without having any software. That is important कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. आपको आता है हैश निकालना, आपको आता है प्राइवेट पब्लिक की निकालना, आपको आता है डिजिटली साइन करना, आपको आता है मर्कल ट्री बनाना. So you can actually, without using any framework, take your university from what they do today to a blockchain based, जहाँ पे रिजल्ट की आपकी कंपाइलेशन होती है, ठीक है. तो ये हमारा ये this is the objective that we do, and if there is a programmer, then it becomes even easier to write a program on this. Okay, अब देखिए, सबसे पहले ये होगा कि every teacher you have, you say कि जी आप जाएं इधर अपनी पब्लिक प्राइवेट की, जैसा अभी हमने रिजल्ट्स के लिए किया,
you create your public private key and share your public key with everybody and don't tell about your private key to anyone. Okay, हो गया. Okay, अब आपने कहा अच्छा जी आप रिजल्ट बनाएं, अपना जाएं, जिस तरह भी बनाते हैं, एक्सेल शीट पे बनाना है, किसी चीज़ पे बनाना है, बनाएं, and then just make sure कि वो करेक्ट है and your maybe HOD is happy, बोर्ड में ले गए अपने डिपार्टमेंट के and you say yes it is fine. अब आप क्या करेंगे कि इवन एक्सेल शीट को भी आप ये कर सकते हैं, ओपन दी एक्सेल शीट इन नोटपैड, तो पूरी शीट खुल जाती है, सही है, नोटपैड के अंदर. उसको कंट्रोल ए करके आप यू कॉपी इट एंड यू ड्रॉप इट इन दी #256 वाले उसमें विंडो में ड्रॉप करें, वो उसका हैश कंप्यूट कर देगी. ठीक है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू टाइप इट ऑन अ नोटपैड. टेक्स्ट जिस हम आमतौर पर करते रहे वो आपकी आसानी के लिए करते रहे, but a hash can be computed of any file as well. Okay, if it is a computer program you can open it. If it's not a computer program, no worries. आप जाके सर नोटपैड में उसकी एक्सेल की फाइल को खोल लें, उसको कॉपी करें, कॉपी करके you drop it in #256 and you get a hash. Then what you take that hash and encrypt it using sorry, this is private key. Teachers private key के साथ उसको आप encrypt कर देंगे. Okay. अच्छा, अभी हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया है, सो आई विल शो यू द पार्ट व्हिच आई हैव डन, दैट आई हैव जनरेटेड 1 रिजल्ट एंड 4 अदर रिजल्ट्स. तो 4 और रिजल्ट्स बनाए हैं इसी तरह से, उनके हैश निकाले हैं, उनके अलग अलग टीचर्स हैं, दे हैव देयर पब्लिक एंड प्राइवेट की. सो आई हैव लाइक 4 रिजल्ट्स और फिर उनका मैंने मर्कल ट्री भी निकाला है. सो हैशिंग और उसी तरह से ट्री बना के मर्कल ट्री निकाला है. सो यू नीड टू लेट्स से कि जो डिपार्टमेंट में ब्लॉक बनना है और उससे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलना है और उसका जो लेजर है वो इज ओनली कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. सो ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट वुड कम एंड मेक इनटू अब देखिए आप लेट्स से कि आपने कहा 1 डिग्री है उसके ये 5 कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल 6 कोर्सेज हैं या व्हाटएवर. दूसरी डिग्री है उसके ये कोर्सेज हैं, तीसरी डिग्री है उसके ये कोर्सेज हैं. सो नाउ एज अ डिपार्टमेंट व्हाट यू डू इज कि हर टीचर ने इसने साइन करके भेज दिया, डिजिटली साइन, ही डिजिटली साइन, डिजिटली साइन, डिजिटली साइन, डिजिटली साइन, ऑल दीज आर डिजिटली साइन और उनके हैशेस आ गए आपके पास. इट्स बेटर कि आप इनके आपस में बना के यू हैश कलेक्ट हैशेस को करें और इसका एक मर्कल ट्री बना लें. ठीक है, सो इट बिकम्स, सो यू क्रिएट अ मर्कल ट्री एंड एंड ऑफ द डे यू हैव अ रूट, एंड रूट जो है वो कैन बी शेयर्ड विद एवरी टीचर दैट दिस इज द रूट. और अब सो ऑल you have a Merkle root and all are digitally signed. अब जो डिपार्टमेंट का हेड है उसने एक नया ब्लॉक क्रिएट करना है. ठीक है, ये होता है दिस इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी दैट ही इज द ओनली गाय हु हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट. और अगर आप कहें नहीं एक पे नहीं, हम कहते हैं कि देयर शुड बी 2 पीपल, यस 2 पीपल कैन अफर्म कि हाँ जी ये इंफॉर्मेशन सारी ठीक है और फिर ब्लॉक बनता है. सो अब ये सारा आपका ब्लॉक बन गया और you have in this block all the results, उनके hashes, transactions, and it should point to the hash of the previous semester results. ठीक है, और ये should point to the hash of the previous semester results. और वो भी आप इधर ले आएंगे, इसका hash यहाँ पे निकाल के imported part of the block, so nobody can go back and change the result here because जो भी कोई change करेगा यहाँ पे ये सारा invalid हो जाएगा. So every time you do, you check whether this hash is pointing to this hash, and you आपको हैश का करना सारा मर्कल ट्री बना हुआ है. सो यू कैन जस्ट गो चेक एंड यू से यस nobody has actually changed it. So चाहे ये फाइलों में ही पड़ा वो, it does not really matter. Okay, so अभी आपको दिखाता हूँ जो okay. So this is what you do, that let's say this is your first result. टीचर ने एक ने let's say कि ब्लॉकचेन पढ़ा रहा है, just kept few students
और ये उनकी असाइनमेंट्स के नंबर हैं और मिड टर्म के नंबर हैं, फाइनल के नंबर हैं, रिजल्ट्स हैं, व्हाटएवर. सो यू हैव अ रिजल्ट फॉर कोर्स 1. सो यू ड्रॉप इट इन SHA-256 utility and find its hash. This is the hash. ठीक है. And then you generate your public private key और इस हैश को यहाँ पे कॉपी करा और कॉपी करके आपने इसको अपनी की के साथ इनक्रिप्ट किया और आपके इससे एक डिजिटल सिग्नेचर आपने जनरेट करा लिया. ओके, सो दिस इज द थिंग विच यू वांट टू इनक्रिप्ट और ये आपका डिजिटल सिग्नेचर है. ओके, AC5VN. सो यू कॉपी दिस द डिजिटल सिग्नेचर and append it with the result. ये digital signature आ गया and now nobody can go and change this because you can always go and check it. बड़ा आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना. आपने एक्सेल की फाइल को उसमें ड्रॉप करना है, उसका हैश निकालना है, इधर डालना है, इधर से आपने देख लेना है and you know कि ये result change हुआ. This could be in a shared folder which anybody can access. So anybody making any changes in this आपको उसको आराम से आके चेक कर सकते हैं. So now this is the course number 2 and course number 2 has different students and different name of the course. You take again hash. ठीक है, आपने hash लिया. hash लेने के बाद आपने अब this has its own public private key. आपने इसकी जो private key से, so you say it is the private key. Okay, so you put the private key and the hash and you generate a digital signature. So ये आपके एक और digital signature आ गए जो आपने results के साथ चाहे अलग एक उसके अंदर notepad खोल के उसमें copy करना है digital signature and put it in a folder. So I'm saying, so this is your result, okay, and this is your digital signature, and you may also want to have the hash and the digital signature maybe in 2 different files. You say hash and the digital signature and this is the Excel file. So these 3 things gets into a folder. Okay, so एक folder में एक transaction आ गई. अब ये शेयर्ड फोल्डर आपके डिपार्टमेंट के किसी कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है, जी ड्राइव पे पड़ा हुआ है. सो दिस इज योर फोल्डर, देन समबडी पुट्स हिज फोल्डर एंड देन दे आर ऑल दीज फोल्डर्स दैट दे आर गेटिंग इन कोर्स 3. सेम थिंग हैपेंस, हैश इज कंप्यूटेड and digitally signed and course 4 this is computed, hash is computed, digitally signed, the signature. अब आप क्या करें, Merkle tree बनाए, hash 1 and 2 पकड़े. So you take hash 1 and 2 and create another hash. Hash 3 and 4 create another hash. And then Merkle root निकाल लें by इन दोनों को पकड़ें और इनका hash. So how do you do? बस concatenate करना है. ये 256 bit, 256 bits. You put them together. So you have 2 into 256 bits. वो hash करके 256 निकाल देगा. This is Merkle tree. So you may have folder. So there is a folder which is you, teacher 1. There is a folder which is teacher 2. There is a folder which is teacher 3. There is a folder which is teacher 4. And you may have, like, if this is a degree, you may have another folder which has this degree 1. Then you have another degree 2. और इसका इसी folder के अंदर, so there is a folder which has all these courses about the degree. और इसमें आपकी एक text file पड़ी हुई है जिसमें आप, और इसके अंदर भी हर एक में 2 टेक्स्ट फाइलें पड़ी हैं, टेक्स्ट फाइल which has 2 files, which is one is the hash.txt or other one is signature.txt. Okay, so every teacher has a folder where he copies his Excel और बाकी Excel की फाइल पड़ी है result. So this is hash file and signature, hash file and signature. अब ये डिग्री कोऑर्डिनेटर क्या करता है, इन सब का एक, इनको आपस में हैशिंग करके एक निकालता है मर्कल ट्री का. वो इधर हैश निकालता है hash.txt और he signed it, his digital signature. इसके ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर देता है. ये डिग्री का पूरा रिजल्ट बन जाता है. ओके, सो सेकंड वन डज द सेम एंड द थर्ड वन डज द सेम, द फोर्थ वन डज द सेम. और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है बैठता है और वो इन सबको एक बनाता है हैश विच इज द मर्कल हैश और अपने साइन इंसर्ट करता है txt. ये सारा फोल्डर उठाता है उसको पकड़ के. दिस इज नाउ अ ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन. ओके, और यहाँ पे प्रीवियस का भी हैश डाल देता है, प्रीवियस ब्लॉक का, सो दैट इट इज लिंक्ड विद दी. सो ही हैज अनदर थिंग व्हिच इज प्रीवियस हैश. ओके,
प्रीवियस जो सेमेस्टर के रिजल्ट का हैश भी इधर डाल देता है, सो गेट्स लिंक्ड, और फिर उसका हैश निकालता है और इसको अपने डिपार्टमेंट के ब्लॉकचेन के अंदर या उस फोल्डर में डाल देता है। तो दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन व्हिच इज ऑन अ शेयर्ड लेजर, और इसको उठा के वो डीन को दे देता है। व्हाट डीन इज डूइंग इज दैट डीन हैज लाइक द सेम फोल्डर, सेट ऑफ फोल्डर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो सारे डिपार्टमेंट्स का एग्जैक्टली वो यही करता है। सो फोल्डर 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 फोल्डर्स which has all the transactions happening everywhere and he computes the hashes। उधर से ट्री बनाता है एक और, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है तो 2 को इकट्ठा करेगा, 2 को इकट्ठा करेगा, 2 हैशेस आएंगे, एक और हैश निकालेगा, उसको पकड़ेगा, उस हैश के ऊपर अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा, पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट्स के साथ उसको बनाएगा और एक और फोल्डर में ड्रॉप कर देगा। ओके, सो दिस इज an excellent blockchain implementation without writing a piece of code। you have not written even a single piece of code। आपने पूरा इसको फाइलें, एक्सेल्स की फाइल्स के जरिए इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, अब दिस इज वेरी गुड। अब यह कि वैलिडेशन में इफ इट इज देयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट कैन ऑलवेज वैलिडेट कि किसी ने चेंज तो नहीं किया। सो व्हेनेवर यू हैव टू वैलिडेट, सो यू कैन जस्ट वैलिडेट कि भाई इसमें चेंज आई है और किस जगह पे चेंज आई है। सो यू कैन फिगर दैट आउट, और अ टीचर कैन फिगर दैट आउट बाय द मर्कल ट्री वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के जी जो मेरी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, मेरी पर्टिकुलर फाइल है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आई हुई है। सो ही कैन ऑल्सो फिगर दैट आउट बाय हैविंग द मर्कल ट्री एंड सम ऑफ द हैशेस। उनको वो खुद फोल्डरों से निकाले, उन हैशेस को विच आर रिक्वायर्ड उसको निकाले, और उससे वो उसको वेरीफाई कर सकता है कि यस नथिंग हैज चेंज, पार्ट है मेरा, he may not have access to, for example let's you don't give access of this folder to all teachers because you think कि वो जाके इसको खराब करेंगे, so you say we are not going to give you access, but what we give you is hashes, few hashes, like I give you hash of this, इन दोनों का हैश दूंगा और इसका हैश दूंगा, तो आप चेक कर लें कि आपका फोल्डर सिर्फ आपको एक्सेस है, उसको आप चेक कर लें कि उसको चेंज तो नहीं हमने किया। आपको इफ यू अगेन हिट दिस, यू से नो देयर इज नो चेंज, यू सी। So you create a blockchain network, और ये वर्कल का रूट है। अच्छा, अब आप इसको अगर किसी को somebody knows how to program it, okay, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वेरी सिंपल प्रोग्राम है, कोई वो नहीं है, and somebody knows how to basically verify it कि हाँ ये है, और ये सारी कीज चाहे फोल्डर्स में पड़ी हुई फाइलें खोलें, सिंपल सी का प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो ये would not take you long to actually write such a program। Okay, so so this is what I want you to do। I have done this much: results, digital signature, respective, I have created a Merkle tree signature, ये नहीं मैंने किया अभी। So you put a digital signature of that hash of the previous semesters निकाल लें, और फिर इसको आगे निकालिए कि भाई complete the blockchain implementation of the result compilation for 4 departments, assuming there are 4 departments, generate a new block for each department and the faculty, link it with the previous block. If a teacher wants to verify using Merkle proofing inclusion of his result and its immutability, tell us how can it be done. So this is assignment number 6. If you have any questions, so you may please ask. Sir, this last part is not clear. इसकी इम्यूटेबिलिटी का देखिए, इम्यूटेबिलिटी का मैंने बताया कि तरीके से, जी मैं बताता हूँ। देखिए, इम्यूटेबिलिटी का ये है कि टीचर को आपने सिर्फ उसके फोल्डर पे एक्सेस दी हुई है, ठीक है, उसको आपने एक्सेस दी हुई है उसके फोल्डर पे। अब वही चाहता है कि यार ये जो मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ है ये ही वैलिड है कि नहीं, आगे जो आगे गया हुआ है, ठीक है, इट्स मेकिंग कॉपीज कॉपीज कॉपीज। अब ये there is a copy with the HOD, then there is a copy with the dean, then there is a copy with the registrar। हर एक के पास अब पूरे रिजल्ट्स की कॉपीज किस किस के पास पड़ी हुई हैं, डीन के ऑफिस के कंप्यूटर्स में पड़ी हुई हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस के कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, वाइस चांसलर के ऑफिस के कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो दैट इज एवरीबडी हैज अ कॉपी ऑफ इट एंड ही वांट्स टू मेक श्योर कि मेरे रिजल्ट को किसी ने चेंज नहीं किया है, वाइस चांसलर ने जाके चेंज नहीं कर दिया है या रजिस्ट्रार ने चेंज नहीं कर दिया है, सही है ना। सो ही वांट्स टू मेक श्योर मेरा रिजल्ट तो नहीं चेंज हुआ, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे आप काइंडली ये जो मर्कल रूट है ये दे दें और ये हैशेस जरा मुझे दे दें आप। सो आई वांट टू चेक कि मेरा रिजल्ट तो नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अगर तो उसका रिजल्ट चेंज हुआ तो क्या होगा
कि वो जो हैश है मर्कल ट्री का, वो हैश चेंज हुआ होगा। सो ही बेसिकली उसको दोबारा से क्रिएट करेगा और देखेगा कि जो रूट है, ये रूट एंड ये रूट से मारे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इफ दे आर कमिंग ऐसे, यस मेरा रिजल्ट जो है वो चेंज हुआ। इफ ही सस्पेक्ट्स कि किसी ने बीच में कोई मेरा रिजल्ट ना चेंज कर दिया हो इन द प्रोसेस ऑफ दिस गेटिंग कॉपीड एवरीवेयर। सर ठीक है, व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि ये दोनों एंड पे फॉरवर्ड कैलकुलेशन ही होगी, यानी Yes. एक सिस्टम ने किया होगा और दूसरा वो खुद करके चेक Yes. कर लेगा। प्रिसाइजली खुद कर लेगा। सही। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें इसका ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन था सर इसमें। जी, सर please. मैं इसको उसके साथ रिलेट करता, जो सिंपल ईआरपी सिस्टम होते हैं उसमें इसकी इंटेग्रिटी होती है, तो इंटेग्रिटी उधर और परमिशन ब्लॉकचेन में समहाउ चेंज नहीं है? अगर वो सारे जो स्कीम है वाइस चांसलर से लेके टीचर तक अगर मिल जाए और किसी स्टूडेंट का चेंज करना चाहे रिजल्ट, तो वो तो उसमें कर सकते हैं, उसको कोई बाद में चेक कर सकता है थर्ड पार्टी वेरीफायर आकर। देखिए ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि हर बंदा करप्ट हो जाएगा पूरे सिस्टम में, टीचर से लेके रजिस्ट्रार से लेके वाइस चांसलर से, एवरीबडी सेज कि यार इसका रिजल्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। फिर वो डिजर्व करते हैं। जी, फिर वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अगर हर शख्स ही करप्ट हो गया तो फिर तो जो है ना कोई ऑब्वियसली कोई नहीं है। लेकिन देखिए ये जो मुझे एग्जांपल और आपको असाइनमेंट देने का मकसद है ना, अभी मसा हमारे स्टूडेंट है उनका एक पेपर भी एक्सेप्ट हो गया जो उन्होंने उस वक्त लिखा था, एंड द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंटिंग इट इन अ कॉन्फ्रेंस इन यूके। सो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वट एवर एप्लीकेशन यू हैव सिलेक्टेड, लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, एंड ट्राई टू डू अ डिज़ाइन, चाहे वो इस तरह से पेपर पे ही हो, चाहे वो आपने किसी ने अगर अपनी कोई प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस को किया हुआ है, किसी ने ब्लॉकचेन को किया हुआ है, किसी ने हेल्थ जो ये HMIS के ऊपर अगर आप देख रहे थे। सो आई वांट नाउ यू टू स्लोली मूव टूवर्ड्स एक्चुअली डूइंग अ डिज़ाइन। डिज़ाइन में जो बहुत कंफ्यूजन है ना जिसके अंदर, वो ये है कि ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होंगी। लेट्स से इफ यू आर अ पेशेंट, ठीक है, आप कहते हो यार मैं पेशेंट हूँ और अस्पताल के सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड एक शेयर्ड लेजर में चला गया और हर पेशेंट को एक्सेस दे दी, तो ये तो मेरा सारा मेडिकल जो रिकॉर्ड है वो सारा वो हो गया, एक्सपोज हो गया। सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेरी बैड डिजाइन ऑफ अ ब्लॉकचेन वेयर यू पुट पेशेंट medical information in a shared ledger which is accessible to people who are not meant to see his medical record। ठीक है, दूसरा आप कहते हैं कि नहीं मैं ये बनाता हूँ कि जो ब्लॉकचेन बनेगी वो मेरी सिर्फ बनेगी। ठीक है, एवरी पेशेंट विल हैव अ ब्लॉकचेन ऑफ हिज ओन, जो ट्रांजैक्शन होंगी वो ओनली इट इज अबाउट मी और मे बी माई फैमिली। यू से नहीं इट्स नॉट अबाउट मी बिकॉज मेरे बच्चों का भी उसके अंदर आ जाए। सो द इंटायर फैमिली medical record should get into a blockchain and should have access to my family physician or maybe few other people, I don't know, insurance company अगर है आपके पास, obviously they need to have a record or maybe few other, क्योंकि आपकी transactions वगैरह होनी है। तो एक जो बहुत बड़ा इसके अंदर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ज़रूरत है ब्लॉकचेन की। अगर ज़रूरत है तो उसके अंदर आपने ब्लॉक क्या होगा, ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, लेजर क्या होगा, शेयर किस किस के साथ होगा, किस किस को एक्सेस होगी, वो सारा आपने डिसाइड करना था। और किस टाइम पे ब्लॉक क्रिएट करना है आपने, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन आर यू गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन व्हिच गेट्स ये सारा हैशेस वैशेस निकाल के ये करेगा, वो किस वक्त बनेगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा इसमें बहुत नेचुरल ब्लॉक फॉर्मुलेशन है सेमेस्टर के एंड के ऊपर। मतलब अगर आप कहें नहीं मैं तो हर टाइम बेस कर लें कि हर हफ्ते में एक नया ब्लॉग बन जाएगा, नोबडी स्टॉपिंग यू टू डू दैट। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में कलेक्ट ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द रिजल्ट्स। आप कहें नहीं हम चाहते हैं कोई टीचर भी जाके ना बीच में ना जाके किसी के क्विज के या उसके एग्जाम के मार्क्स ना चेंज करे। ठीक है, एंड देन यू से एवरी वीक एंड ऑफ द वीक you form a new block, a new block, a new block, a new block. So the transactions, what are the transaction? जितना भी एक हफ्ते में उसने जो भी कर दिया, क्विज़ेस ले लिए, असाइनमेंट्स ले लिए, मार्क्स लगा दिए, वो एक ट्रांजैक्शन होगी। सो डिज़ाइन नोबडी इज आस्किंग यू कि भाई आपने किस तरह से बनाना है आपने खुद से सोचना है कि नए ब्लॉक ने कब क्रिएट होना है जिसने कि लिंक करना है। अच्छा, नया ब्लॉक का मतलब ये है कि देन नोबडी कैन चेंज द डेटा। ठीक है, अगर आपने पर हफ्ते कर दिया, अब आपने सेमेस्टर पे किया, उसका मतलब टीचर को आपने ये पावर दी हुई है कि भाई तू जा पीछे
तूने जो चेंज करना करता रहे, बिकॉज इट्स जस्ट यू हु आर जस्ट डूइंग, यू हैव एक्सेल शीट और यू हैव अ क्लाइंट एप्लीकेशन। हम उसकी इम्यूटेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम इम्यूटेबिलिटी चैलेंज होगी जब रिजल्ट्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से क्लियर हो गया, फाइनल हो गया, उसके बाद इवन द टीचर कैन नॉट चेंज इट, द एचओडी कैन नॉट चेंज, नोबडी कैन चेंज इट, देन यू आर पुटिंग इट इन अ ब्लॉकचेन। सी, तो ये दूसरा अहम सवाल है। पहला सवाल अगेन जैसे मैंने कहा कि वाकई ब्लॉकचेन के अंदर जाना है, दूसरा ये है कि वो लेजर किस किस को आपने शेयर कराना है, तीसरा ट्रांजैक्शंस क्या होनी है, चौथा कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं एक ब्लॉक कब क्रिएट करना है, व्हेन आर यू गोइंग टू क्रिएट अ ब्लॉक, बिकॉज अनलेस अ ब्लॉक इज क्रिएटेड आप डाटा को चेंज कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें कर सकते हैं अगर आप इस तरह का कोई चीज़ है, बट वंस द ब्लॉक इज क्रिएटेड देन यू कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज वो सारे उसकी ब्लॉकचेन के लिंक्स को वो ख़राब कर देगा। सो आई वुड अर्ज यू टू जस्ट थिंक अबाउट डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, और वो आप करें तो इंशाल्लाह एक अच्छा मज़े का सा आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इधर वी कैन कंटिन्यू और जस्ट मे बी लाइक 7 more minutes। वो थोड़ा मैं वो सवाल अपना क्लियर नहीं कर सकता। अगर हम ERPs को देखें, जो ERPs एस्टेब्लिश्ड हैं SAP की हैं, IBM के अपने हैं, IBM मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं अपने पावर प्लांट पे, लेकिन IBM अब ब्लॉकचेन की तरफ जा रहा है और वो इस पे वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जो जैसे आप भी यही कह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत कैसे है, उसका जो हम फ़र्क डाल रहे हैं ERP और ब्लॉकचेन का, अगर सिर्फ ERPs को लें, ERP ट्रांजैक्शंस ही देख रही होती हैं, चाहे वो अगर आप उसको एजुकेशन सेक्टर में ले हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में ले हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर में ले हैं, उसकी हम रिप्लेसमेंट पे ब्लॉकचेन को लेके आ रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे थे परमिशन ब्लॉकचेन का, इसकी जो वो सिक्योरिटी या म्यूटेबिलिटी का फैक्टर कोई ऐसा है कि कोई भी अगर पता हमें जज हो जाए, जैसे ERPs में आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और वाइस चांसलर अगर मिल जाए या सारे ही मिल जाए, तो वो सारा डाटा ही वेनिश कर सकते हैं, कोई ऑडिटर आके चेक ही नहीं कर पाएगा कि किस टाइम पे चेंज हुआ है, वो उसको बैक एंड पे चेंज कर दे। अगर कोई SAP का है तो वो उसकी लॉकिंग की होती है, वो नहीं आप चेंज कर सकते। अगर इन हाउस बिल्ड है तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सर ऐसा ब्लॉकचेन में है, जो मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप चेंज करें, चाहे कोई भी करे, तो वो जैसे बिटकॉइन में तो आपको नजर आ जाएगा ना, जब भी चेंज होगा नजर आएगा डाटा। लेकिन ये जो स्कूल, ये जो आप कॉलेज वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में, इसमें जब परमिशन में हम जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो सारे के सारे कंप्यूटर्स पे डाटा चेंज कर दें, अगर करना चाहे किसी। लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। आप देखिए, होता ये है कि ये जो ERP है ना, ठीक है, अभी जो ये SAP है या Oracle है या इवन द ERP वी हैव डेवलप्ड इन केयर, अच्छा उसमें भी हमने किया हुआ है कि ERP में सारी ट्रांजैक्शंस जा रही हैं, ठीक है, ठीक है, एंड यू नो कि यार ये हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो जो ERP का हमारा फ्रेमवर्क है वो इंटरफेस करता है हाइपरलेजर के साथ, ठीक है, और उधर आप ये कह सकते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसको मैं ब्लॉकचेन पे लेके जाना चाहता हूँ, अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, नॉट रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब मसलन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कोई बंदा आ रहा है सुबह इतने बजे जा रहा है, उसने लीव के लिए अप्लाई किया है, उसने यूं किया, उसने ये किया, एंड एज यू राइटली सेड वो ERP इज नथिंग बट वो सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती जा रही है, सही है। आपने कहा यार मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है कि ये जो मेरा इस सप्लायर से ये जो आ रहा है ना, एक बहुत एक्सपेंसिव किस्म का इक्विपमेंट, ठीक है, इसको मैं ब्लॉकचेन पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं सप्लायर को और इसको जो टेस्ट, जो क्वालिफिकेशन कर रहा है, जो ये कर रहा है, इन सब को मैं इस ब्लॉकचेन पे डालना चाहता हूँ। ओके, अच्छा, अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो ERP है वो तो सेंट्रल, आपके सेंट्रल सर्वर पे चल रही है, एक ही कॉपी है उसकी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। उधर आप कह रहे हैं यार आई एम नॉट कंसर्न, एक कॉपी है, किसी ने जाके उसमें चेंज भी किया ना तो मुझे नहीं कंसर्न है उसका, मेरी तरफ से करता रहे, बिकॉज दोज ट्रांजेक्शन्स आर, आई डोंट केयर अबाउट द म्यूटेबिलिटी, बट आई ट्रस्ट के वो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन कोई कर रहा है तो जैसा आपने कहा मिल के कर लेंगे तो कर लेंगे। लेकिन आपने कहा नहीं ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, अब ये एक और एप्लीकेशन है, अब ये हाइपर लेजर पे चला गया। अब हाइपर लेजर ने क्या किया, उसने कहा यार अपनी एक मशीन दे दो, मैंने यहाँ पे ना अपनी एक हाइपर लेजर की नोड बनानी है, आपको एक पीयर बनाना है, ठीक है। आप गए अपने उसके पास, जिसने आपको सप्लायर के पास, आपने कहा यार मैंने ना इसके पीयर बनाना है, ये जो ट्रांजैक्शन लिंक मेरे ERP से ही है, ERP किक कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को बिटकॉइन इसके ब्लॉकचेन के ऊपर, सही है। फिर आप गए, जो आपका क्वालिटी का कर रहा है, उसने कहा यार मैं तो ये सर्वर दे रहा हूँ, इसको मैं एक पीयर बना रहा हूँ, ठीक है। सो ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल यू कन्वर्ट देम इनटू पीयर्स।
आप कहोगे इस पे मैंने ना लेजर की, अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरे इधर लेजर बनेगा और सबके पास एक शेयर्ड कॉपी होगी इसकी, सही है। अब it is not in the ERP, it is in your, and you may still want to copy it in the ERP, सही है। अब आपका ये सारे का सारा एक ब्लॉकचेन, ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे चलेगी। ठीक है सर, मैं क्लियर हो गया। यानी हाइब्रिड सिस्टम आपने बनाए कि जो ऐसी ट्रांजैक्शन थी बड़ी सोफिस्टिकेटेड, उसको आप ब्लॉकचेन पे ले गए और ईआरपी बैक एंड पे सारी लॉगिंग कर रहा था, लेकिन वो जो आपकी सोफिस्टिकेटेड थी वो थ्रू ब्लॉकचेन आई। आप प्लीज रिमेंबर ब्लॉकचेन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ईआरपी, ठीक है। इट ओनली ऑगमेंट्स ईआरपी बाय यू स्पेसिफाइंग कि ये ट्रांजैक्शन मैंने ईआरपी पे लेके जानी है। यानी उसके जो कॉन्स हैं ईआरपी के, उनके कुछ पॉसिबिलिटीज को वो कवर करेगा। प्रिसाइजली। तो ये जितने ईआरपी, अब देखें ना आईबीएम ने क्यों इतने पैसे झोंक रहा है इसमें, सैप क्यों इसके अंदर आ गया, इसमें ऑरिकल क्यों आ गया, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि यार ये एक मैजिक है, यानी कि अगर आपने ईआरपी में जहां पे इम्यूटेबिलिटी लेकर आनी है तो आप साथ लगाएं हाइपरलेजर को, प्लग इट इन, इट्स प्लगेबल, इट्स प्लगेबल विद ऑलमोस्ट ऑल ईआरपी सिस्टम्स। और आपका मजे की बात ये होती है जो इंटरफेस है ना उस पे आ रहा होता है, जो ट्रांजैक्शन आ रही है जैसे आपने कहा उस पे आप क्लिक करके आप कहते हैं ये ट्रांजैक्शन पुट इट ऑन दी हाइपरलेजर, पुट इट ऑन द ब्लॉकचेन, सही है। तो वो एक जाके ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे चली जाती है और उधर जाके वो इस तरह से वो चलना शुरू कर देती है। तो ये itself is very very interesting work and I'll urge again everybody कि अभी इसमें बहुत कम publications हैं इन चीज़ों पे ना, तो please this is the right time, you just every student in the class should have one publication। और यकीन करें आप अगर थोड़ा सा मोटिवेट करें और थोड़ा गाइड करें तो इरादा तो है करने का, लेकिन कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है कोई। आप करें, मैं ये समझता हूँ कि हर स्टूडेंट इस क्लास में एक पब्लिकेशन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें लोगों को अभी नहीं पता, रिसर्च लिटरेचर में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, यू विल नॉट फाइंड व्हाट वी आर टॉकिंग इन द क्लास इन रिसर्च लिटरेचर, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। तो हम इसको जैसा आपने मतलब ये ईआरपी वाली बात कही है, ठीक है, दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पब्लिकेशन, वेरी गुड पब्लिकेशन कि जी पहले कि कौन सी ट्रांजैक्शन निकालनी है, ठीक है, so which transaction को आप automatically it should have some parameters which says कि हाँ ये transaction must go on a blockchain, और फिर उसको किस तरह blockchain पे लेकर आना है और वो फिर किस तरह से how it will communicate with your ERP system। Talking about a framework, not a specific example, and then you take a specific example कि इसमें ये हम blockchain पे लेकर आएंगे और इस तरह से डिजाइन होगी। So I think ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का काम है, इसको ज़रूर कीजिए आप लोग। हम लेट्स जस्ट अनदर 5 to 10 minutes, 5 minutes हम इसको करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह। So anybody has any other questions? जी सर वो सॉरी मैं फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरा असाइनमेंट 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो हाइपरलेजर फैब्रिक है वो पूरा डिजाइन करना है उस पे, क्योंकि जो इंक्रिप्शन है, जी मुझे एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। असाइनमेंट नंबर 5 की मैं निकालता हूँ, लेट मी जस्ट, मेरे ख्याल इसी में पड़ी हुई है। शुरू में पड़ी है असाइनमेंट नंबर, मैं एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, लेट मी जस्ट ओपन द असाइनमेंट 5 अप, then we can discuss it। ये
असाइनमेंट नंबर 5 थोड़ा बताएंगी ये तो मुझे? सर असाइनमेंट नंबर 5 में जो मैंने किया ना उसमें ये किया है कि जो आपने केस की पब्लिक और प्राइवेट की भेजी थी ना उससे डिक्रिप्शन इनवैलिड आ रही थी, तो फिर मैंने 512 से लेके उसको 1024 बिट की कीज जनरेट की, तो फिर मैंने उसके दिखा दिया कि जो मेरी अपनी की जनरेट हुई थी ना उससे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो कर ली और सारा तरीका दिखा दिया कि इस तरह की ट्रांसक्रिप्ट की डिटेल्स थी। गुड इनफ सर, क्योंकि उससे इनवैलिड आ रहा है रिजल्ट। नहीं इनवैलिड अगर आपने पब्लिक प्राइवेट की जनरेट की तो इनवैलिड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा सर, वो जो आपकी प्रोवाइडेड है ना उससे इंक्रिप्शन हो रही है, डिक्रिप्शन। आमतौर पे मैं आपको बता देता हूँ इस वजह से इनवैलिड आ सकता है कि बाज़-औक़ात जो आरएसए की भी वेरिएंट्स हैं, ठीक है, अगर मैंने किसी एक के साथ इनक्रिप्ट किया, आप किसी और के साथ डिक्रिप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिक्रिप्ट सही नहीं होगा। नंबर 1 नंबर 2 ये है कि अदरवाइज अगर आपके पास मैंने प्राइवेट की से किया है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट ना हो सके। सर लेकिन वो बार मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे कीजिएगा ना इंस्टेड के हम इसको जो हमारे टीए है ना आप काइंडली उनको वो भेज दें, लेट देम उसको रेप्लिकेट, उसको उस अकरेंस को रेप्लिकेट करके ना आपको बता देंगे कि क्या मसला है। सर ये मेरी भी एक ऑब्जर्वेशन है, आरएसए से जब एनक्रिप्ट करते हैं वंस द सेम सेशन इज गोइंग ऑन इट डिक्रिप्ट्स आल्सो एंड एनक्रिप्ट्स आल्सो सक्सेसफुली। अगर आप उसको सेशन को खत्म करके एट टाइम्स वो दोबारा कीज यूज करते हैं तो वो इनवैलिड दे देता है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। नहीं होना नहीं चाहिए। देखो सारी दुनिया इस पे चल रही है, वो हो सकता है जो उसने उसमें जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसका कोई मसला हो, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिसेंटली अभी जो सॉफ्टवेयर शेयर हुआ है ना सर, जो रिजल्ट शेयर करने के लिए हुआ है, मैंने वो यूज किया है, दैट इज वर्किंग फाइन। उसको बंद भी कर देते हैं उसके बाद वो ग्रुप पे भी डाल दें या टीए को भेज दें, हम इनको भी जो ये क्वेश्चन कर रही है ना, तो वो सॉफ्टवेयर में मसला हो सकता है। तो आप अगर ये जो कह रहे हैं ना अभी जो सॉफ्टवेयर हमने दोबारा शेयर किया है उसको इस्तेमाल करके एक दफा देख लें। जी सर, दैट इज गुड। अच्छा लेट्स नाउ अब देखिए हुआ ये कि जब इन द ब्लॉकचेन स्पेशली इथेरियम, they said that, and I also discussed this, that you sometimes if you have humongous amount of data you don't want the data to be part of the blockchain. अब जो especially NFTs हैं, they are videos, they are images, and they don't want to make the blockchain bulky, because why to just make copy of every the data on every computer? It does not make anything, because you're not adding any value. ये मतलब जो भी आप डिजाइन करें उसमें आपको भी इस तरह से सोचना है कि sometimes like data need not to be part of the block. If it is humongous amount of data, it needs not to be. मसलन अगर आप स्टूडेंट के आईडीज हैं, उनकी तस्वीरें हैं, आप कहें यार ये मैं कहाँ तस्वीरें हैं हर एक ब्लॉकचेन में डालूंगा ना, so you can take out the data which is the heavy data out of the transactions and copy it on an IPFS network. सही है? So ये भी एक डिजाइन डिसीजन है what you take on the IPF network, which is the interplanetary file system. और ये हमने last time we शुरू किया था. I told you that this is just a new paradigm where they want the web to be distributed, permanent and Merkle is important. ठीक है? ये इसकी जो बेसिस है ना वो मर्कल ट्री के ऊपर है। अब आप कहोगे ये तो this is kind of amazing that how Merkle tree can just create almost a new web. Such a simple concept which is just doing nothing. All it is doing is just taking hashes and making a Merkle tree, and there is a Merkle root. How can it create a new web? Is just amazing. ठीक है? So let's see कि ये किस तरह से इस वक्त जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, Merkle tree helps us to create a distributed network. ठीक है? So that is the promise, that Merkle tree networks or Merkle tree web would change the shape of the network from here or here to this. okay? और इसका हमने कहा था कि ये प्रोटोकॉल अपग्रेड होता है इससे, और द पीपल दे इथेरियम, और ये क्यों बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बिकॉज इथेरियम सिलेक्टेड टू यूज IPFS अगेंस्ट जस्ट अ नॉर्मल वेब। इथेरियम ये भी कह सकता था अच्छा इस जगह पे आप ना
इस सर्वर के ऊपर अपने कंटेंट डाल दें, नो, बट दे बिकॉज द होल concept, essence of the blockchain is in distribution. That has to be distributed. So that's why Ethereum also selected a protocol which was already there. They said जो फाइल स्टोर होगी NFT की वो IPFS पे होगी. So IP का जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ज़्यादा एक एड्रेस बेस होता है जो कि आपका IP का एड्रेस होता है. दैट इज सेंट्रल टू IP प्रोटोकॉल. और उसके ऊपर सेंटर टू so whenever you say www.facebook.com, so Facebook is basically an address. एक नंबर है, एक उस कंप्यूटर उस सर्वर का एड्रेस है जो आप लिखते हैं. instead of writing that number because it is very cumbersome to remember that number, so we write Facebook. So first thing is it goes to a DNS. A DNS का resolution होता है, it replaces that Facebook before it goes on the internet with a number. ठीक है, वो आप पे बर्डन नहीं डालता. ये जो प्रोटोकॉल है, डज नॉट बर्डन यू टू रिमेंबर इंस्टेड ऑफ फेसबुक अ नंबर, इंस्टेड ऑफ याहू अ नंबर, इंस्टेड ऑफ case.pk.edu.pk a number. So it says let's not burden the user with putting numbers. Let them just use names which are just common, and let have another system which will resolve that this name is basically this server address. So वो उधर उसको रिप्लेस करके उस कंप्यूटर का एड्रेस डाल देता है जिसको आप एक्सेस कर रहे होते हैं. सही है. तो ये दिस हाउ द आईपी प्रोटोकॉल वर्क्स. वेरी सिंपल. ये लोकेशन के ऊपर जाता है, उस कंप्यूटर के ऊपर जिसका कि आपने नंबर दिया होता है. ठीक है. और इसके ऊपर ये जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे लिंक्ड हैं कि किस इंफॉर्मेशन को तोड़ना है, भेजना है, रिसीव करना है, जोड़ना है और उसको ऊपर एप्लीकेशन तक देना है. सो द मेन थिंग इज द आईपी लेयर. हमसे कहते हैं लेयर्ड प्रोटोकॉल है. द आईपी लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जहाँ पे कि स्विचिंग होती है, जहाँ पे वो देखता है कि अच्छा आपने जब facebook.com किया तो दिस इज अ कंप्यूटर समवेयर इन अमेरिका. सो दिस एड्रेस जब मेरे ये घर के राउटर पे जाता है, वो देखता है, वो कहता है ओ ये तो बाहर का है. जिस तरह हमारे खत होते हैं उसके ऊपर अगर आप यूएसए का एड्रेस लिख देते हैं तो उनको पता होता है ये जाएगा जीपीओ से जाएगा वो कराची वाले, उधर से ये फिर उधर जाएगा, उधर से फिर. सो प्रिसाइजली द सेम थिंग हैपेंस टू एन आईपी पैकेट. वंस इट हैज एन एड्रेस, इट सेज हमारे राउटर के पास जाता है, कहता है यार ये तो मेरा नहीं है, इसको निकालो बाहर. होते होते वो कराची पहुंच जाता है. कराची पे होता है कि अच्छा ये तो कहीं अमेरिका का है, तो वो उसको आगे किसी राउटर पे भेज देता है. So it just keeps going through a network of routers and gets to an actual machine, a server, जिसके के ऊपर वो फाइल पड़ी होती है. ठीक है. तो ये सेंट्रलाइज है. एवरीबडी हु इज यूजिंग फेसबुक काइंड ऑफ, और गूगल इवन, और जीमेल और याहू, तो उनके सर्वर्स का एक एड्रेस है एंड एवरीबडी इज जस्ट गोइंग टू दैट सर्वर. दिस इज हाउ द इंटरनेट वर्क्स टुडे. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स टुडे. जैसा मैंने आपसे कहा, जब आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल .com एंड देन अब उस कंप्यूटर के अंदर उस फोल्डर्स में ये कोई इमेज पड़ी हुई है PNG फॉर्म में. ठीक है. सो अब उसका पाथ उस कंप्यूटर में, लाइक योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर हैज फोल्डर्स के जी आपका C ड्राइव है, C ड्राइव के ऊपर फिर ये वाली है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और इधर आपकी फाइल पड़ी होती है. एग्जैक्टली सिमिलरली all the information which you are accessing physically actually sits in a computer, or that computer has an IP address which is a location. और अब ये राउटर्स को पता होता है कि ये जिस तरह से हमारे होता है ना कि आपने लिखा हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, देन द टाउन एंड द सिटी एंड द कंट्री. सो इसी तरह से ये IP का एड्रेस बनता है. उसको पता होता है कि मैंने किधर जाना है. इट रीचेस टू दैट कंप्यूटर, एक्चुअली द फिजिकल कंप्यूटर, एंड गेट्स टू दैट फोल्डर, एंड दैट फोल्डर दैट फाइल, एंड इट गेट्स यू द फाइल, एंड आपको इट ब्रिंग्स दैट फाइल टू यू. तो इस तरह से, और ये हमने पहले देख लिया कि दिस फाइल, देयर मे बी कॉपीज ऑफ दिस फाइल स्प्रेड ऑल ओवर द इंटरनेट, लेकिन IP प्रोटोकॉल does not even care. It does not have the capability to figure out that where else this particular file may also be stored, and where it does not have to travel all the way to that server and get you the file. Okay, so ये इसकी weakness strength है. ये मैंने last time पे discuss किया था. Even एक ही हॉल में बैठे हुए हैं, शेयरिंग मैंने WhatsApp पे कुछ शेयर कर दिया है, so everybody has to go to the WhatsApp server
and get that information. Okay. और अब ये है कि अब इन लोगों ने बिकॉज डिले आना शुरू हो जाते हैं, ऑब्वियसली सो मैनी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जस्ट हिटिंग फेसबुक, वो फेसबुक तो बैठ जाती है फिर, तो ये ऑल द टाइम दे ऑप्टिमाइजिंग, पोरिंग इन मनी फर्स्ट, तो उधर ही स्केल करते जाते हैं. मैं आई ट्राई टू शो यू द पिक्चर ऑफ द फेसबुक के, वो एक शहर है, सर्वर्स लगी, मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है. फिर जैसे नहीं हम ना data center they spread all over the places so that for everything they don't have to go to the central जहाँ पे की जगह पड़ी हुई है. तो ये इस तरह से करता है, और उसमें फिर यही मसला आता है कि अगर सर्वर गया है, अस्पताल का सर्वर बैठ गया है, ठीक है, नादरा का सर्वर बैठ गया है, so then you are just helpless, you are disconnected, and if you are disconnected then you cannot actually access what otherwise may be there in the computer of a person who is sitting just next to you. और फिर मैंने आपको बताया था एप्स ने और ज़्यादा इसको क्लोज कर दिया है. पहले तो ये वेब बेस्ड सारे वो ब्राउज़र में खुल जाते थे सारी चीज़ें, अभी एप्लीकेशंस आ रही हैं जो कि बहुत क्लोज एप्लीकेशन है. सो इसका लाइक काइंड ऑफ गोइंग बैक, गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस एंड कंज्यूमिंग दिस मच बैंडविड्थ, और ये सारा बैंडविड्थ का है, कॉस्ट है एसोसिएटेड विद द बैंडविड्थ. देन वंस इट ट्रेवल्स, योर इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू लॉस एंजल्स. मतलब अभी इन्होंने ये किया नेटफ्लिक्स ने कि यूके में जो क्वालिटी ऑफ वीडियो थी उसको डिग्रेड कर दिया, बिकॉज सच अ लोड and the network cannot sustain, decrease the quality of the video being played on the Netflix to these countries to a low resolution. और आपने देखा होगा आपके पास भी जैसे ही कनेक्टिविटी का मसला आता है, this YouTube and they start playing a low resolution video because of the reason this. तो ये अगर if you go and on a website it'll talk about कि जी IPFS क्या है फिर, ठीक है. IPFS जो है ना वो है कि it is not the location of a machine which has your file, rather it changes it to a file, a content identifier कि ये किस कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है, ठीक है. तो it gives a file and ID. अब ये सारे जो IPFS का प्रोटोकॉल है ये कहता है ये फाइल है, इसका ये ID है. फर्दर टू दिस इससे बिगर फाइल, लेट्स से एक पूरी मूवी है जो कि कुछ गीगाबाइट की है, वो क्या करेगा, उसको तोड़ देगा और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, एंड इट कैन जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर द प्लेसेस. ओके, और जब इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेसेस उधर से मर्कल ट्री बनाएगा, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू मेक अ मर्कल ट्री ऑफ, एंड दिस रियली फन टू लर्न, एंड आई थिंक के in the next class we will start learning that इसमें मर्कल ट्री कहाँ से आता है, कंटेंट बेस्ड है, किस तरह से उसको तोड़ता है. जैसे कि ये बनाता है 256 किलोबाइट, लेट्स से यू हैव अ 4.7 गीगाबाइट, तो ये 18,360 ब्लॉक्स बनेंगे. इट मे लाई ऑन वन कंप्यूटर और इट मे लाई ऑन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बट इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस फाइल इनटू smaller pieces and can get some from here, some from here, some from here, some from here. So this is just an amazing protocol, another way of looking at the internet. Similar like torrent download. kind of torrent का download है, लेकिन इसमें I think it's a lot more than that, but combine उन्होंने वही किया जैसा torrent में होता है ना, it's almost like this. और लेकिन I'm not sure कि torrent में इस तरह से distributed नहीं होता, you don't cut down the file and spread it all over the places ना. तो ये क्या करते हैं, फाइल को तोड़ के हर जगह पे फैला देते हैं. और अगर आपने फाइल की नई वर्जन भी निकाल लिया ना, तो उसमें बाजू का लेट्स से आप थीसिस लिख रहे हैं एंड यू हैव चेंजेस मेड इन सम पार्ट, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में आपने चेंज कर दिया. और जब उसने तोड़ा है ना तो उसके शुरू के पीसेस वैसे के वैसे अगले चेंज हो गए, ठीक है. अगर 3-4 बंदों के पास आपके पड़ा हुआ है ना, तो वो मर्कल ट्री से देखेगा कि क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें चेंज हुई हैं. जहाँ पे सेम है वो क्लोजेस्ट कंप्यूटर से उठा लेगा, दे ऑलरेडी हैव अ कॉपी ऑफ इट. और जो चीज़ें चेंज हैं वो सिर्फ आपके पास जाएगा, वहाँ से उठा लेगा. सो नाउ इसके पास भी एक कॉपी. तो इस तरह के ना बड़े इंटरेस्टिंग इसने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, वेरी इंट्रिकेट बट इट वर्क्स. सो तो इसका मज़ा ये है कि इट हैज़ यू नो this Merkle tree which we will cover in the next class. और फिर इसका अपना coin भी है which is a file coin.
कि if you have a space in your computer and you can let that space being used by IPSF network, आप कहेंगे मेरे पास इतनी स्पेस है, आपको थोड़े बहुत पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे जब ये उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा आपकी स्पेस को, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, हम देखेंगे मर्कल ट्री क्या करता है इसके अंदर, व्हाट इज द कंटेंट बेस्ड एड्रेसिंग, हाउ इट इज डिफरेंट देन अ लोकेशन बेस्ड एड्रेसिंग। क्या हो तो यू मे आस्क प्लीज। सर असाइनमेंट नंबर 5 जो वो कन्वर्ट सॉरी मैं बता देंगे जी, बताइएगा। सबमिट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जो लिंक है सर उसके ऊपर जब अपलोड करते हैं तो हमेशा एरर देता है। तो व्हाट्सएप नंबर है एग्जाम लिखा आता है ग्रुप के अंदर, उस तो वो जो है उस पर मैंने किया था। देखिए मैं ना ये अगर स्पेसिफिकली आप टीए से पूछ लें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर देगा कि वेयर टू लोड दी असाइनमेंट, और मैं उनको बताता हूँ कि वो ना आप फरूख बात कर रहे हैं? जी सर। चलिए मैं उनको टीए को बताता हूँ, he'll call you। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने प्राइवेट और पब्लिक की आपने एक असाइनमेंट दी थी जो 1 to 5 नंबर की हमने प्राइवेट और पब्लिक की निकालनी थी, तो सर उसको मैंने मैटलैब पे भी किया था। तो जो जिस फार्मूले से हमने निकाले थे ना, तो उससे प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हो जाता था, डिक्रिप्ट नहीं होता था। और आपने जो एग्जांपल पे हमें 91 और 83 वाली एग्जांपल दी हुई थी, उसको भी मैंने डिक्रिप्ट करके देखा था, तो वो भी नहीं हो रही थी उसके साथ साथ। अच्छा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट मैटलैब पे भी कैलकुलेट करके पावर 29 जिसकी आता है। नहीं, आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन। आमतौर पे ना कोई सॉफ्टवेयर में बात हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद से जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो तो आई हैव डन इट माई सेल्फ। कोई कह रहा था अगर नया सेशन करें तो नहीं होता, लेकिन ना ये टीए ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से करके देखा हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि काइंडली कॉल हिम, और ही इज़ वेरी रिसेप्टिव। तो आपके साथ वो बैठ के ना इसको एक दफ़ा मेक श्योर करेगा कि ये जो भी मसला आपको आ रहा है ना वो ख़त्म हो। ओके। अच्छा सर, ये जो आपने असाइनमेंट्स दी हैं, जैसे 5 भी बात कर रहे हैं लोग के वो नहीं हो रहे, बेसिकली तो उसमें कंसेप्ट्स है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिक्रिप्ट नहीं हो रहा तो वो तो इतना इशू नहीं है सर। मैंने यही कहा था सबसे कि लेट्स नॉट वरी अबाउट द एग्जैक्ट आंसर, इट्स बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, बट आई एम ग्लैड दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द कोर कॉन्सेप्ट्स के हमें सारे समझ आते जा रहे हैं। और ये भी जो मैंने असल असाइनमेंट अभी भी जो दिया वो भी ये है कि ये जब आप करेंगे ना आपको और बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर होंगी कि टुमारो यू शुड एबल टू डिज़ाइन योर ओन ब्लॉकचेन नेटवर्क। और जो बड़ा अच्छा किसी ने आज क्वेश्चंस किया था कि ईआरपी से रिलेटेड, जाहिर है बहुत सारे लोगों को वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम क्या होते हैं उनका नहीं पता, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी वैलिड क्वेश्चन कि भाई ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सिस्टम को लेके बनाई जाती है, ना कि हर चीज को इसमें करने की ना कोई कोशिश करते हैं ना करनी चाहिए। वो मैंने ही किया था असल में सर। मैं वैसे जॉब्स के हवाले से चेक करता रहता हूँ, जो जॉब्स नहीं आती, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ। आज का जी अभी आपने एक ऐड दिखाई है हायर एजुकेशन कमीशन की, एक एनर्जी एफिशिएंसी इदारा बनाया है, वो भी आईबीए के थ्रू इंटरव्यूज ले रहा है, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर अभी से आ रहा है कि जी आप ब्लॉकचेन के सोल्यूशन क्या है। Yeah, there'll be many opportunities and I'll very strongly suggest कि एक तो ये करें, और जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रामर हैं कोर्स में उनकी हम अलग से कुछ ना we can have little exposure of them on Ethereum and Hyperledger Fabric, थोड़ा सा उनको उधर एक्सपोज देंगे, not but I'll not make it part of the course so that those who are not programmer वो उनको इससे फर्क ना पड़े। लेकिन मैं I very strongly believe कि डिज़ाइन करना मुश्किल है, कोडिंग करना मुश्किल नहीं है, इसका डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको डिजाइन समझ आ गया ना करना, तो कोडर तो आप कोई हायर कर लेंगे, किसी बच्चे को हायर करके लगा दें आप, ठीक है। इट इज द डिजाइन दैट मैटर्स। interested हैं, at least there should be some more workshops for them. Last time also वो अभी टीए कर रहे हैं, हम एक वर्कशॉप कराएंगे हाइपरलेजर के ऊपर। I highly appreciate this effort, sir. Thank you so much. जी। Excuse me, sir. With में highest marks किसके हैं? हाँ, ये तो ये बताएंगे आपको, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि किसके हैं। टोटल कितना है? सर आपने कहा था कि डिसाइड करेंगे आफ्टर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। Let me ask TA and then I'll get back on the group.
Right, sir. Thank you. चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का. थैंक यू फॉर बियरिंग मी फॉर 3 आवर्स. बड़ा मुश्किल होता है किसी को सुनना. सर थैंक यू वेरी मच. ओके, Sir, thank you so much. Thank you, sir. thank you, Thank you, sir. thank you.